So unemployment, when we're dealing with unemployment, so far in the past papers, there have been like 5 questions on unemployment, some on its policies also. हमारे वेरिएंट में ऑल्दो अभी नवंबर 24 के अंदर एक क्वेश्चन आया था. It had both part A and part B. It was much simpler, but um, like we know that marks are not so easy to get. There are certain relevant informations that you're supposed to keep in. Um, so उस हिसाब से we'll see कि क्या क्या और मजीद possibilities हैं and what can come. So dealing with unemployment का topic, there are some things that we want to first clear out. That remember, unemployment is a term which can be used for any resource. Okay, you can have unemployment in the use of capital, you can have unemployment in the use of labor, even in natural resources, right? So, unemployment is simply what it means is that you have a resource and that resource is not being utilized, right? बट ये वाला जो चैप्टर है अनएम्प्लॉयमेंट का, दे आर डीलिंग मोस्टली विद द लेबर. ठीक है. एंड एज फार लेबर गोज, वी नो लेबर इज अबाउट द the mental and the physical ability that people bring, right? हमने लेबर को पहले एक्सप्लेन भी किया है that labor is the human resource, right? It's the human resource. Human resource is anyone who can mentally and physically provide their labor in order to produce goods and services. There is no product that can be produced without labor or human resource. ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जब हम एक स्किल्ड ह्यूमन की बात करते हैं तो उसके लिए एक हम ह्यूमन कैपिटल का टर्म यूज करते हैं. There is a difference between human capital and physical capital. Physical capital deals with machines, while human capital deals with a person who is highly skilled in certain professions. तो ये बात होती है. A few ideas that I would like you to completely clear कि एक country के अंदर when we're talking about labor and unemployment and all, we have to have an understanding that your country can have people from the age of 0 to 100 plus, right? Um, Different countries have different legal working age. Normally, we talk about 15 to 65. ये जो लोग होते हैं from 15 to 65, this is called the working age population, right? These are the people who can actually work in your economy. Um, People below 15 and people after the retirement age, these are your dependent population, right? Both of them. ये दोनों dependent population कहलाई जाती है. So when we're defining unemployment, this is how we define it. This is what you're going to say. What is unemployment? So you're going to say for 1 mark that unemployment occurs when people who are willing and able to work, willing and able. Able के अंदर it can be the physical, it can be the legal working age also. So people who are willing and able to work cannot find a job. Okay. अब इस डेफिनेशन के हिसाब से willing and able to work के अंदर तो people below 15 and above 65 may also count because they might be interested in working and they may have the ability to do so. So we want to clear it out that this does not mean that everyone in your country who is willing and able to work is part, and if they can't find the work, is considered unemployed. You have to subtract these dependent population. Now, what also happens is that people from this 15 to 65,
There are some people who are working, okay? There are people who are working, and there are people who are seeking work, but they don't have it. Basically, what I'm saying is people who are employed and people who are unemployed. So, what makes you unemployed? That you are of the legal working age, 15 to 65, you're looking for work, you can't find work. तो फिर तुम unemployed होते हो. ये जो हमारे people who are employed and people who are unemployed of the working age population, इसको हम कहते हैं ये इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन है. They're either working or they're looking for work. They want to participate. And then इसी range के अंदर you have set of people who don't want to work. 15 to 65 में, but they're not interested in work, right? Uh, you can have like homemakers, like housewives and house husbands, right? You have people, students who are like full-time students. Some people might be of that age, but they might be ill and they don't have the health, to be part of it. और भी बहुत सारे हो सकते हैं. You can have like uh, discouraged workers. ये कौन होते हैं discouraged workers? They've been looking for work, but for the very long time, they haven't been able to find work. So, they decide that we don't even want to be part of this workforce and all of that. ठीक है. तो ये भी हो जाते हैं लोग जो इस सिस्टम में होते हैं. इनको आप, those who are not working and are not even interested in work, इनको हम कहते हैं economically inactive population, right? So, like you guys right now who are full-time A-level students studying in college and not doing any work or are not even self-employed, uh, you are economically inactive because you're not even seeking work. So we can't take you in the calculation. Simple as that. ठीक हो गया. So this is something that we want to have like a real clarity over कि क्या होता है. अब ये जो हमारे वर्किंग एज में एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड है, इनको हम एक तो नंबर वन इकोनॉमिकली एक्टिव कहते हैं, बट अनदर टर्म विच इज कॉमनली यूज्ड फॉर देम इज लेबर force. Okay. What is labor force? Labor force is simply number of people employed plus number of people unemployed. ठीक है. एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, ये आपका लेबर फोर्स होता है. They're from 15 to 65, they're interested in working or they're part of the workforce. ठीक है. अब जहां तक वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात है और उसमें लेबर फोर्स की बात है, we have to have a clarity what can change this number. ठीक है. सो इसमें हम कहते हैं कि कंट्रीज may डिसाइड, एक तो इसको पुश कर दे आगे. They might decide we want additional workers. 65 is no more the working age population. We would like the working age population to be 70. Now, all of a sudden, your working age population has increased. Sometimes the school might decide कि school leaving age जो है हम कम करना चाहते हैं, या school leaving age, just imagine in an economy, the government might feel that, you know what, we, even though the legal working age is 15, we want students to stay in school for another 2 years and do their A levels also, because when they graduate, can get higher incomes. So may they decide to push this. इससे क्या होगा? आपकी working age population कम हो जाएगी, आपका labor force can get affected.
So they can maneuver with the retirement age, they can maneuver with the school leaving age, okay? They can encourage participation rate. So that's another term that we want to be clear with. What is participation rate? You know how working age we said was 15 to 65, let's say. Mostly this is the one that is used. Okay. 15 to 65 के अंदर how many people are actively, economically active labor force? How much labor force out of the working age? So let's suppose if I was to give an example, your working age population is, let's say, 300 million people, and your labor force is somewhere around 75%. Okay, 75% of the people is the labor force out of your working age population, meaning out of 300 million people, the active population is 75%. So 75% अगर हम calculate करें, what does that become? 100 का 75, so 300 ka 75 would be like 225 million people, right? So this is what we're saying. 225 million people are either employed plus unemployed in your country, but they are interested to be part of the economic activity, right? That means 25% of the people are not. So ये तुम्हें थोड़ी सी calculation में you should have an idea about what that means. When and actually this is what your labor force participation rate is. कि जब हम calculate करते हैं, we check out how many percentage of people are presenting themselves to work out of the working age population times 100, which in this case is my 75%. So for every 100 people, 75 people are presenting themselves, we want to work. So हम ये कह रहे हैं कि what if the country wants to increase the labor force participation? How can we do that? Well, there are different aspects what you can do. One of the things you can do in order to increase the labor force participation is you can change the cultural values in your economy. Like, for example, you can increase the women participation in your country. How do you do that? Well, you make workforce more safe, you educate them, you provide the facilities that they require, you might offer them higher wages. There are various ways you can get the women to come into your workforce, right? Like, for example, some people say that Pakistan एक अजीब गरीब मुल्क है. What does that mean, अजीब गरीब मुल्क है? They say that there is such a big there's such a big working age population. Gender-wise, अगर आप population का split भी देखें, तो it's almost 50-50. 49-51 would be the greatest ratio that you may possibly have. So Pakistan के अंदर the women participation rate, especially in the urban centers, is way lesser than the rural. They say Pakistan is एक बहुत ही अजीब गरीब मुल्क है जिसके अंदर such a big proportion of your working age population is not interested in working. You need to push them into work, and all of a sudden, what do you realize? There's an increase in the supply of labor, wages falls down, and firms benefit in that way. Households might benefit that there are two people working now, higher incomes for the household, you know. Uh, so there are a lot of benefits that you can see in it also. So, women participation can be one of those things. I feel one of the things that you can also do is you can increase the part-time occupation possibilities in your country. इससे क्या होगा that these full-time students may work at convenience stores like it happens in the Western economies. In Pakistan economies, we are growing with this trend, but unfortunately, we don't have that part-time ka structure as yet, which can integrate
a very large proportion of students have like कि या तो वो पढ़ाई कर लें या तो वो फुल टाइम सॉरी फुल टाइम नौकरी कर लें, right? What if we have a scenario like in the Western economies where, like mall के अंदर, a restaurant would be willing to give you a नौकरी for 6 hours and pay you per hour के रेट के हिसाब से, and we might start thinking like that. Because developing countries में employment को आप कैसे देखते हो that okay, I have a 24-hour uh, convenience store. So to run it, I need four people doing 12 hours ki shift. And in every shift, I need two people, right? And now you're going to hire somebody as a full-time worker because हमारे यहाँ unemployment भी है और गुर्बत भी है और लोग बगैर पढ़ाई के भी नौकरी ढूंढ रहे हैं. तो इसीलिए हम लोग उस एस्पेक्ट में देखते नहीं है ज्यादा. But just imagine if we could do something like that, 24 hours, and we need two people in every shift, right? So basically, the job requirement is for 48 hours, right? Because दो बंदे 12 hours, 24 hours each, तो फिर ये बन जाता है तकरीबन 48 hours का जॉब रिक्वायरमेंट. अब इस ये चीज मैं चार लोगों से कराऊं, 12 12 hours की शिफ्ट, या मैं 8 लोगों से कराऊं विथ 6 6 hour शिफ्ट, या मैं 12 लोगों से करा लूं. ठीक है. सो आई कैन डिवाइड द जॉब. सो उससे भी हो सकता है. यू कैन चेंज, यू कैन ब्रिंग इन द पार्ट टाइम ऑप्शंस. उसमें क्या होता है कि इवन द विमेन who are homemakers and they have दोपहर के अंदर idle time or they can do work from home, they can become part-time workers also, and it benefits everybody overall, right? फिर जब हम एम्प्लॉयमेंट के टॉपिक में और फर्दर जाते हैं, सो दे ऑल्सो आस्क यू के मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड unemployment rate. You want to be able to make distinction between the two. Level of unemployment is simply talking about number of people unemployed in your country and how that number is changing. ठीक है. Unemployment rate is a percentage. Unemployment rate is a percentage. How do you find it? Simply you take the number of people unemployed, okay, and you divide it by the labor force, people employed plus people looking for work, times 100, and you get yourself the percentage. ठीक है. तो इस तरीके से आप अनएम्प्लॉयमेंट का रेट निकाल सकते हो. ये मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू और केस स्टडी का 1 मार्क के लिए आ सकता है, यूजिंग द फॉर्मूला एंड फाइंडिंग आउट. आई वुड ऑलवेज रेकमेंड, अगर इफ द क्वेश्चन इज अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, एक तो लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है. तो वी सेड अनएम्प्लॉयमेंट इज when a person is willing and able to work but cannot find a job. उसको further कैसे explain करेंगे? This will only include people who are between the ages of 15 to 65. That means you have to take out the number of below 15 and above 65 who are uninterested. And third, you may also want to mention that uh, unemployment will only be people who are economically active. That means who are actually seeking work. Okay. So those people who are not even, they are part of 15 to 65 working age population. But if they're not interested in working, तो फिर आप उसको कैलकुलेशन में नहीं ले सकते हो. So those are not unemployed. तो थोड़ा सा elaborate करेंगे हम अपनी डेफिनेशन के अंदर, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला अगर आप देना चाहते हो तो दे दो. But usually, if they require, then you were supposed to write it. Otherwise, there's no need to really write. Okay. Other things like, अगर एक आपकी इकोनॉमी में, बाय द वे, जस्ट टू गिव यू अ रेट, यही रेट पाकिस्तान का है, तकरीबन 7.1% आया है. अभी ये गवर्नमेंट का रिलीज डेटा है, बाय द वे. So 7.1%. Let's suppose last year, last month,
The unemployment rate was also 7.1%. This month, same 7.1%. Does that mean the same people who were unemployed last month are the same people who are unemployed this month also, right? So we say no, economy के अंदर continuously there are people who are getting नौकरी and there are people who are getting not नौकरी. There are people who are leaving the labor force and there are new people who are coming into the labor force. It's a very it's like a flow concept. People are coming in. It's not like एक particular time period के ऊपर मैंने कहा कि 7.1% unemployment है. तो वो जो number of people are unemployed है वो पहले भी वही थे और आज भी वही है. That's not how it works. It's a very flow concept. There are people becoming unemployed for various reasons. भाई अभी यूनिवर्सिटी छोड़ी है and now I've just joined the workforce. I can't find नौकरी. Okay. One could be बॉस के साथ लड़ाई होगी मैंने नौकरी छोड़ दी बदतमीजी कर रहा था या फिर एक बंदा बोलता है कि ये जो वेज रेट चल रही है दिस इज जस्ट नॉट वैल्यू फॉर माय टाइम आई वुड रादर डू फोटोग्राफी और समथिंग लाइक दैट राइट और अ पर्सन हैज बीन फायर्ड you know a person decided what ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन है a woman decide भाई मैंने नहीं और काम करना I would rather take care of the kids ये भी हो सकता है so there are plenty of reasons why people become unemployed. And there are plenty of reasons why that people go out of unemployment. They're not unemployed anymore. जरूरी नहीं है कि they found work. एक तो ये तो best होगा that people are not unemployed anymore. Why? Because they found work. People sometimes they come out of unemployment because they decided कि you know what, मैं यूनिवर्सिटी जाके मास्टर्स करना चाहता हूँ. Okay, so now I'm not seeking work anymore. I want to finish my 1 year, 2 years of masters, not part of unemployment anymore. Or, like I said before, people decide, you know what, uh, I want to become a homemaker, and so they leave. फिर एक हो सकता है, and this is very common by the way. That's why we look at the unemployment numbers जब हम realistically countries के अंदर देखते हैं ना US वगैरह के अंदर तो we take a very close look at this. The people who become discouraged and they decide I would rather be homeless, you know, and they decide कि मैंने बड़ी नौकरी ढूंढी मुझे नहीं मिली I'm discouraged I don't want to work anymore and they become homeless. तो ये भी एक बहुत बड़ा एक रीजनेबल नंबर ऑफ पीपल होते हैं एक इकोनॉमी के अंदर who sort of like do this. Okay, so from your course point of view ये कुछ definition जरूरी है. उसके बाद अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं ना द 5 क्वेश्चंस आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द बिगिनिंग अभी तक क्वेश्चंस एक जो नवंबर में आ चुका है हमारे वेरिएंट के अंदर तो आई वुड अस्यूम कि अब इस पे नहीं आएगा द टू वेज हाउ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी मेजर्ड तो द क्वेश्चन वाज अबाउट एक्सप्लेन द टू measures of unemployment and if unemployment measurement of unemployment is difficult राइट ये दोनों चीजें तुम्हारे कोर्स के लिए जरूरी है तो एक तो है क्लेमेंट काउंट और दूसरा है लेबर फोर्स सर्वे LFS. Okay, these are the two methods of unemployment. If you name them correctly you get 1 mark. 8 mark का जो पहला मार्क होता है for knowledge and understanding that you can name the two types. You will be surprised kids can't do that. Excuse me. Kids were actually able to explain what they are, but they were not able to name it. So ये names matter. दूसरा, you have to explain what claimant count is. We're just looking for a basic definition where you can just give us an idea that government simply looks at the data of the number of people claiming unemployment benefits in the country. Okay?
सो whoever is claiming unemployment benefits, आपने उनको जाके measure कर लिया out of the registered labor force, and you find out the percentage, and ये आपका claimant count होता है, number of people. एनी लैंग्वेज में तुम ये बात समझा दो, ठीक हो गया। फिर लेबर फोर्स सर्वे जो है, इफ आई गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड ऑन इट, ये यूनाइटेड नेशंस का एक मेथड है जिसमें उन्होंने एक इदारा बनाया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इट वर्क्स इन overwhelming majority of the countries, the civilized countries, the part of economic activity countries in the world। और ये यूनाइटेड नेशंस का जो डिपार्टमेंट है आईएलओ का, ये इंडिपेंडेंटली काम करता है सर्वे की बेसिस पे, और लोगों से डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, डिफरेंट रीजन्स, they ask questions on whether they're employed, unemployed, working conditions, grievances, all sorts of labor related issues. Okay. एंड दे डू इट ऑफ अ सैंपल पॉपुलेशन, क्योंकि सर्वे आप जाके 300 मिलियन लोगों का नहीं कर सकते, 100 मिलियन लोगों का नहीं कर सकते। So you do a survey of an X amount of people, okay, based on their whatever ILO की requirement is, 40,000 people, 50,000 people, and you do set of questions of that sample population. Basically, we're looking for the word कि you know that यहाँ पे कोई ना कोई सर्वे रिलेटेड काम हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद you have to know the advantages of the two methods. Claimant count का जो advantage है, it is cheap to calculate, it is quick to calculate, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी ये सारे डेटास अवेलेबल है, very fast, very easy, not so expensive also. Government does not need to do much in order to calculate this. But then you have to know the disadvantages, because disadvantages basically deals with the difficulties of this. Okay? क्योंकि इसके अंदर हम कहते हैं कि there is a possibility of overstate and understate. Government might manipulate the data. Uh, People might do sort of like frauds, कि वो कैश के ऊपर काम कर रहे होते हैं और अपने आप को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्लेम कर रहे होते हैं, राइट। तो लोग इलीगली, बेसिकली द वर्ड वुड बी इलीगली, जो है वो जाके बेनिफिट्स क्लेम कर रहे हैं। Sometimes it's quite possible that people are not claiming unemployment benefit. Why? Because they have like a status issue, कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट कैसे, एक बंदा है आईटी में काम कर रहा है, he's been fired and he have a respect in the family and neighborhood, and वो unemployment benefit ले, that might hurt his ego. Or maybe he might think कि नौकरी तो मिल ही जाएगी, and wife is also working, we can sustain ourselves, so it's not a big deal. We'll find the नौकरी, so they might not claim unemployment benefit. तो इस तरह से there can be an understatement of it. Okay? And frauds की वजह से there can be overstatements, or government might be trying to hide the data or something, and they might make it difficult, might not give people unemployment benefits as such so easily. They can manipulate who's employed and who's unemployed, and they can create their own criteria, right? So it might be difficult to do so. उसी तरह से another problem that I might say is that you can't, no comparison. Countries like Pakistan versus USA, USA में unemployment benefits मिलते हैं, पाकिस्तान में नहीं मिलते हैं। अब क्या करो? Between countries, you can't use this claimant count का measure, right? Labor force, we all agree that labor force is a better method. Why? Uh, if we talk about in terms of the advantages of it, right? So जब हम advantages की बात करते हैं तो हम कहते हैं, you know what, one of the advantages is that you can compare it. बिकॉज इसके पीछे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉपर तरीके से एक
सिंगुलर आइडिया से, लाइक फॉर एग्जांपल, ग्लोबली इफ देर ऑपरेटिंग इन 170 समथिंग कंट्रीज, तो फिर उनके पास एक फिक्स क्राइटेरिया होना चाहिए, हु इज अनएम्प्लॉयड. So they'll say, okay, so a person who is looking for work for the last 4 weeks and hasn't been able to find work, that guy is unemployed. ठीक है? A person has found work, but his boss has said, come after 2 weeks. So for those 2 weeks, that guy is considered unemployed, right? So ये criteria जो है, अब आप रखते हैं, a person who is on a government training scheme, he will not be considered unemployed. A person who is working in his family business, not getting money, but he's working in his family business, not unemployed. A person who is self-employed, not unemployed, right? So इस तरह से they have fixed criterias, and you can use those criterias amongst countries, and फिर आपका comparison apples to apples का comparison हो जाता है. So in that way, it is a reasonable measure. एक अच्छे से सर्वे के साथ आप करते हैं, and it is internationally recognized, so it is good. Okay? But obviously there is disadvantage to it. Disadvantage क्योंकि ये एक सर्वे है, तो you definitely will always have a sampling error. People are not giving the right data. They might be hiding something. It is time consuming. By the time you've done the computation, the data has become obsolete. Like we said, it's a flow concept. Very quickly, changes are happening. It is very expensive to calculate, and it might not even show the right data. So ये आपका कंपैरिजन है, और जब आप इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं आपस के अंदर, तो लेबर फोर्स सर्वे इज मच बेटर कंपैरेटिवली टू अप्लाई एंड कनेक्ट इंटरनेशनली. बाकी मैं क्वेश्चंस के हिसाब से करा दूंगा. फिर उसके बाद ये हमारे वेरिएंट में नहीं आया है क्वेश्चन इसके ऊपर, लेकिन जैसे नवंबर 23 के अंदर दूसरे वेरिएंट 23 के वेरिएंट में आ चुका है, causes of unemployment, right? So you need to know that. फिर नवंबर 25 के अंदर भी causes of unemployment में आया, जिसमें उन्होंने फ्रिक्शनल एंड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर दी. फिर अलग ही वेरिएंट के अंदर उन्होंने स्ट्रक्चरल और सिक्लिकल की बात कर ली है. हमारे वेरिएंट में अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है अबाउट द कॉज. आई वुड सस्पेक्ट कि हमारे पास अब ड्यू है ये वाला क्वेश्चन, the types of unemployment, the causes of unemployment. When we talk about the causes of unemployment, okay, you have to be very clear, क्योंकि causes of unemployment पता होंगे अगर आपको, तो फिर जब इसकी करेक्शन पॉलिसीज आती हैं, तो फिर you will be able to answer those also. Your main category of unemployment is frictional. I'll go from the least serious to the most serious. How is Structural. payment account cheaper if you have to pay वापस बोलो unemployment please. benefit measure? How is claimant account cheaper if they have to pay unemployment benefits to measure? Uh, no, if you देखो, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो आप दे रहे हो, दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ द मेथडोलॉजी कि आप अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करने चाह रहे हो, इसकी वजह से पे कर रहे हो. You're paying unemployment benefit because of the social welfare and economic well-being and all. So you're paying anyways because of other reasons. Now that you're paying that, हम ये कह रहे हैं कि okay, now I want to find out इकोनॉमी में कितने लोग unemployed हैं. So let's find out how many people are unemployed. तो उसके लिए one of the methods you are using is कि because we're already paying people unemployment benefits, तो now let's calculate that. तो वो जो मेथड है, वो जो कैलकुलेशन है, that is cheap, is what we're saying. And we're not saying कि in order to measure unemployment, we're paying people unemployment benefit. Cause and effect में फर्क है. Do you follow what I'm saying?
You don't see it as a whole. No, no, you can't see it as a whole because the cause and effect is completely different. If I was to say, okay, I want to measure unemployment and it's very difficult to measure unemployment, yeah, I want to find a way, I want to find a structure. So in order to measure that, let's give whoever is unemployed unemployment benefit. But that's not the case. That's not why you're giving unemployment benefit. So we can't include that as part of the cost of unemployment. We would rather, अगर हम उसको बात करें तो ये तो मैं ज्यादा उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कर सकता हूँ as a consequence of unemployment. I would say that see the government has to take on the burden of unemployment, and that is so problematic for the overall economy and its condition. जहां तक मैं specifically बात कर रहा हूँ, I'm just simply saying I want to measure something. Measuring that is expensive or cheap. तो उस point of view से तो it's very cheap. I'm already paying people. Might as well, you know, just take the data, put in an algorithm who just simply measures the number of people who are coming and taking unemployment benefit out of the people who are registered as labor force. Percentage निकल गया. It's a very simple thing. जब मैं लेबर फोर्स सर्वे करने जाता हूं तो फिर मुझे पूरी टीम हायर करनी पड़ती है इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री. आई हैव टू गिव देम ऑफिस, आई हैव टू गिव देम कार्स, आई हैव टू गिव देम कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स, एंड आई हैव टू टेल देम कि जाओ एक अच्छा सा सैंपल पॉपुलेशन बनाओ ऑफ 40,000 पीपल. कीप दोज 40,000 पीपल इन योर चेक एंड यू गो कंटिन्यूसली every month जाके उन लोगों से फोन के ऊपर या पर्सनली विजिट करके उनसे इन सेट ऑफ क्वेश्चंस के आंसर्स निकलवाओ. वी नो that when there are data collection through this sampling, people lie on it. People don't tell the truth. It could be because they're hiding something, or it could be because they just don't want to give they don't want to do the survey. You're asking me 20 questions. I don't want to do it. आई डोंट थिंक सो मच मैं फजूल आंसर्स दे सकता हूँ उसके ऊपर. तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एंड अ कॉस्टली प्रोसेस बिकॉज आई हैव टू run an entire organization in order to do that. Unemployment benefits में क्या है? I'm already giving people unemployment benefits. Like चलो पाकिस्तान का केस उठा लेते हैं. पाकिस्तान के केस में वी सेइंग के लेबर फोर्स सर्वे नहीं करते. लेट्स डू a measurement through unemployment benefit. तो प्रॉब्लम क्या आ गया? हम तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ही नहीं देते. तो फिर हमारे लिए ये मेथड इररेलेवेंट हो जाता है. ठीक है. Now if I say कि in order to make this method work, let me give everybody unemployment benefit, so that's not something that we're talking about over here. And that's just not the purpose of unemployment benefit. Transfer payments is given for the welfare and all, not for the measurement purposes. Okay. हमारे पास तीन methods हैं. I've listed them down from the least serious to the most serious. I'll talk about why least and why most. But you are required to know the subset of it. पहले तो जब हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करते हैं, देयर इज अ वेरी क्लियर एंड सिंपल डेफिनेशन के फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है. Frictional unemployment is when a person is moving from one job to another. That's it. Okay. Now, there could be various reasons why people are moving from one job to another. ठीक है. One is voluntary unemployment. ये by the way हम पूरा O level में कराते हैं. So those of you who have done O levels, you're probably already aware of that. Voluntary unemployment क्या होती है? That a person says, you know what, at this wage rate, I'm not interested in taking on this job. Like for example, current market, drivers market would be for a full
part-time worker, part-time driver is 40,000. That's the market wage rate. But an individual employee might say, you know what, at 40,000, I'm not interested in working here. I might decide to do a rickshaw business, रिक्शा चला लेता हूँ, फूड डिलीवरी कर लेता हूँ, टिप्स में ज्यादा बन जाएंगे, वेटर्स बन जाता हूँ, or something or the other. But at this wage rate, they're not interested in taking on that particular naukri or any naukri for that matter, because one might say it's, it's not worth my time and effort. It's a waste of time. तो ये voluntary unemployment होती है. Then you also have something called a search unemployment. Search unemployment is that I am looking for a better paying job somewhere else that works better for me. Maybe I want more challenging work. Maybe I'm looking a better corporate job. But जब हम search की बात कर रहे होते हैं तो the main reason is that I am looking for a better um, Naukri. Okay, it's a better paying job. It might have a better career orientation. Um, something along those lines that you're looking for something better. वॉलंटरी में इससे कंपेयर करो तो वॉलंटरी में वन इज जस्ट गिविंग अ रीजन कि भाई इस वेज पे मैं काम नहीं करना चाहता, और दूसरे के अंदर है कि मैं कॉर्पोरेट में बैंकिंग के अंदर काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि यू नो व्हाट, इसके अंदर आई वांट अ बेटर पेइंग नौकरी, सो यू क्विट ओवर देयर एंड यू आर लुकिंग फॉर समथिंग बेटर समवेयर एल्स. And it could be just simply better working conditions, different city. It could be any of those reasons, as long as an improvement is likely to come. फिर उसके बाद हमारे पास कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट आती है. कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम ये लोग बात करते हैं तो कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आप कहते हैं कि एक बंदा जो है वो एक किस्म के वर्क से दूसरे एक पीरियड बीच के अंदर आया है. जैसे इन्होंने जो एग्जांपल्स दिए हैं जो ओ लेवल में भी देते हैं और इसमें भी देते हैं कि एक बंदा है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, नाउ दैट कंस्ट्रक्शन साइट इज डन, नाउ दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने तक जो है वो टेम्पररी जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है. तो इसको आप कहते हैं कि इट्स अ कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट. ये एक्टर्स के साथ भी होता है. they're not so worried about it. They're gonna find something better. They will start on some other project. Meanwhile, जब तक वो project start नहीं होता, you can be unemployed for the duration. And then lastly, you have the seasonal unemployment. This is the easiest one to talk about. Seasonal unemployment obviously has to deal with certain time of the year in certain organizations. Again, we don't worry so much about it. There are ways through which you can correct each and every one of them. That will be the policy that will be discussed a little later on. Uh, फिर जब हम स्ट्रक्चरल के केस में जाते हैं, जैसे फ्रिक्शनल में हमने बोला अ पर्सन इज बिटवीन जॉब्स फॉर वेरियस रीजन, उसी तरह से स्ट्रक्चरल के अंदर जब हम बात करते हैं तो we're टॉकिंग अबाउट दैट ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर there are some demand supply industry related changes that are taking place. Okay, and these ones are more serious than the frictional one, because these ones are a bit more on the permanent side. जैसे seasonal, structural, search, voluntary, we know that these unemployments will always exist in the economy because people will always be between jobs. You can't eliminate that. You can reduce it, but you cannot eliminate. Structural is much more on the permanent side. For example, पाकिस्तान का टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ जाता है, खराब हो जाता है. We're losing comparative advantage. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारा पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है. या जैसे जैसे कंट्रीज डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, डेवलपिंग होती हैं, एंड देर गोइंग अप द डेवलपमेंट लैडर, दे मूव फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी, एंड इट्स वेरी कॉमन दैट दैट हैपेंस, राइट. तो स्ट्रक्चरल के अंदर देर इज एन ओवरऑल change in the demand and the supply of certain industries in the economy.
एंड उसकी वजह से जो है देयर कुड बी मिसमैच बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस. इसको मैं रीजंस इसके बता देता हूँ. इसके रीजंस के अंदर जब हम जाते हैं तो दे सजेस्ट टेक्नोलॉजी सॉरी रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है एक. रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वुड बी समथिंग लाइक अगर पाकिस्तानी सर्जिकल इक्विपमेंट की डिमांड गिर जाती है, या फुटबॉल या स्पोर्टिंग गुड्स की डिमांड पाकिस्तान से स्पेशली गिर जाती है, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन सियालकोट because there is a high concentration of industries in a particular region, right? ये इसके अंदर माइनिंग का भी सीन हो सकता है. इट कुड बी इंडस्ट्रियल related also. So regional has more to do with the concentration of certain organizations in a particular region. Then you have technological. अभी जैसे ड्रोन्स आ जाएंगे और रोबोट्स आ जाएंगे और आ रहे हैं. आई थिंक टेस्ला जस्ट अनाउंस दैट वी गोना वर्क ऑन ह्यूमनॉइड्स एंड नॉट we're gonna discontinue Tesla Model S and X and all. तो जैसे जैसे इस पूरी साइट के ऊपर इम्प्रूवमेंट्स आएंगी और एआई की इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और इम्प्रूवमेंट्स आएगी, देयर गोइंग टू बी अ मैसिव लेआउट. आई थिंक अभी लेआउट्स बाय द वे वेस्टर्न इकोनॉमीज में चल रहे हैं. Amazon just let go of some like hundreds of thousands of people. पूरे ओवरऑल टेक के अंदर देयर मैसिव फायरिंग हैपनिंग बिकॉज वी आर assuming it's probably because of the AI that they're not required anymore. ठीक है. फिर उसके बाद आपके पास दे टॉक अबाउट इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट. डोमेस्टिक इंडस्ट्री से फॉरेन कंपेटिटिव इंडस्ट्रीज की वजह से कुछ चेंजेस होते हैं. आई यूजली डोंट टीच दिस वन, बट बैमफर्ड के अंदर क्योंकि है तो देन वी शुड बी टीचिंग दिस. क्योंकि बैमफर्ड में लाइक आई सेड वन ऑफ द क्वेश्चंस जो आ गए थे, उन्होंने कहा फ्रिक्शनल और टेक्नोलॉजिकल के बीच में बताओ. तो उस वजह से in my previous lectures in the drive and all, you might not see this, but I think it's worth mentioning because I've mentioned this many, many, many times before also. That Bamford should be your primary source of knowledge because marking scheme literally Bamford से copy paste हो रही है. ठीक है? So very important if you want to gain marks. Um, सो इसके अंदर इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर इफ आई वाज डिफाइन एग्जैक्टली हाउ बैमफर्ड सेज इट इट इज. तो बैमफर्ड ने इसको एक्सप्लेन किया है कि इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट occurs when workers lose their jobs because demand switches from domestic industries to competitive foreign industries, right? तो ये इस वजह से जो है इसको आपने इंटरनेशनल का नाम दे दिया. इट्स अ स्ट्रक्चरल चेंज दैट इज हैपनिंग. आई थिंक पाकिस्तान के अंदर अगर टेक्सटाइल में ये प्रॉब्लम आएगी तो इट विल बी वन ऑफ द रीजन. इंटरनेशनल के बांग्लादेश इज डूइंग मच बेटर, इंडिया इज डूइंग फिनोमिनल, चाइना इज डूइंग ग्रेट. We're losing the competitive advantage, and our local demand is going to fall as a result of that unless we do something major. And I think our current industries are talking to the government that fix this problem of us losing our comparative advantage. We're 34 or 38% more costly than the region, so we need to deal with that. फिर उसके बाद जब हम सिक्लिकल में जाते हैं तो सिक्लिकल को आप डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. और क्यों कहते हैं इसको डिमांड डेफिशिएंट? सिंपल रीजन है. Because overall economy के अंदर aggregate demand is falling. It has to do with the trade cycle. I think we have done trade cycle. It has to do with the trade cycle. When your trade cycle is going through the down cycle, uh, तो ये वाला जो पीरियड होता है इसमें ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड इज फॉलिंग. तो इट्स नॉट जस्ट वन और टू इंडस्ट्री, इट्स एग्रीगेट इकोनॉमी विच इज फॉलिंग डाउन, जिसकी वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट होती है. इसका अगर मैं डायग्राम तुमको बना दूं, क्योंकि बैम्फर्ड इज मेकिंग इट, सो आई विल मेक इट एंड एक्सप्लेन इट थ्रू दैट. बिकॉज
cyclical unemployment जब आप पढ़ेंगे ना उसके अंदर you're going to see uh, that they might call it a Keynesian. Let me see if Bamford is actually saying that or not. Um, I don't think Bamford is saying that. लेकिन keep in mind कि ये जो होता है तुम्हारा it is from the Keynesian's view. A2 में जब आप आओगे ना तो that's when we'll make this distinction. But just hear me out for a minute. Basically होता क्या है if I make a labor market का diagram, it's not part of your course, but just bear with me. एक तरफ हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं क्वांटिटी ऑफ लेबर, दूसरे एक्सिस के ऊपर हम ले लेते हैं वेजेस, क्योंकि द प्राइस ऑफ अ गुड, यहाँ पे लेबर इज द क्वांटिटी, तो द प्राइस ऑफ लेबर इज द वेजेस। जिस तरह से द प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इज इंटरेस्ट रेट, राइट? तो उस हिसाब से हु डिमांड्स द लेबर? तो वी से द फर्म्स, इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड्स, governments, they demand labor. If the wage rate is high, they'll demand less people. And if the wage rate is low, they're going to demand more people. तो ये आपका aggregate total demand for labor है. This is how there is an overwhelming agreement on that. Higher wages के ऊपर every firm would want to hire fewer people. Lower wages, everyone would want to hire more. Now, who is the supplier of labor? It's the people. At low wage rates, people will be willing to work less and may be interested less. But as the wages go up, people realize sitting at home, doing our hobbies, wasting time has an opportunity cost. So as the wages go up, more and more people will present themselves. Pakistan में जब wages ऊपर जाएंगी, so students will be interested in part-time work. Housewives who have education and all and they can work, they will be interested in working more. तो उसकी बेसिस पे हमारे पास लेट्स अस्यूम एक मार्केट में वेज रेट डिटरमिन हुआ हुआ है and the number of people being hired as a result of that. Let me call it Q. WO की वेज पे इकोनॉमी के अंदर QO वर्कर्स आर बीइंग हायर्ड. नाउ पूरी इकोनॉमी का ट्रेड साइकिल गिर जाता है. Just think about that ADAS diagram in your head. Real output, price level, ADAS. With the price levels, economy stands here. Because of the trade cycle falling, overall aggregate demand falls. When aggregate demand falls, the economy shrinks. When aggregate demand falls, what will happen to the demand for labor? Well, the demand for labor is going to shift to the left, and the curve is going to shift to the left. Now, when the curve shifts to the left, this is where the two schools of thoughts have different opinions. From the new classical school of thought point of view, when the demand falls down for workers at this given wage rate, the demand has fallen, the supply has increased, there is an excess supply of workers, and that creates unemployment. From new classical's point of view, wages will quickly come down and supply will go away because some people will realize wages come ho gayi hai, now we're not interested in working anymore. And then when the wages goes down, some firms will say, we're interested in hiring more people. So some people are discouraged while some firms are encouraged, or market mein clear ho gaya. There is no unemployment. That's what classicals are saying. Markets mein wages girengi, there will be no unemployment. But this is where the distinction comes. This is where the Keynesians come and they say, well, the wages cannot fall down. Wages don't fall down so quickly. They take time to fall down. अब वो जब तक नहीं गिरती हैं, the quantity demand for labor is less while the quantity supplied for labor is more.
And so this surplus will be unemployed and they will remain unemployed जब तक wages फ्यूचर में गिर नहीं जाती. I think Keynesians are absolutely correct. Keynesians are actually not only they don't only say that wages don't fall quickly, they even say कि prices don't fall easily. ये जो हमारा diagram बनाया है ना, a normal ADAS का कि AD falls down and then the new classical says markets will correct and new equilibrium will come here with lower prices and less real output. यहाँ पर भी Keynesians कहते हैं this will not fall so quick immediately. Prices are sticky. Prices don't fall immediately. They wait. तो फॉर एग्जाम्पल इफ अगर Amazon और ये सब यूएस वगैरह के अंदर फायरिंग करेंगे इवन ऑन अ मैसिव लेवल पूरा टेक इंडस्ट्री डज दैट. तो जब लोग दूसरी नौकरियों पे अप्लाई करेंगे फॉर द मोमेंट दे गोना से वी वांट द सेम वेजेस एज वी वर गेटिंग बिफोर. बट वंस दे रियलाइज कि यार ये तो नौकरी मिल ही नहीं रही है. So it will take some time and then the wages will start to go down and then this unemployment will reduce. I hope I've cleared myself. ये cyclical है. Least serious to most serious की जब हम बात करते हैं, this will always persist in the economy. It is short term. Okay, so अगर हम बात करते हैं seriousness की, तो this is short term and affects fewer people. Okay. स्ट्रक्चरल जो है वो थोड़ी ज्यादा लॉन्ग टर्म होती है. इट्स मोर परमानेंट एंड इट अफेक्ट्स मेनी पीपल. पूरी पूरी इंडस्ट्रीज के लोग. सिक्लिकल इज ऑल्सो लॉन्ग रन, लॉन्ग टर्म, एंड इफ इट अफेक्ट्स आई से जस्ट वेरी मेनी people. There's no such thing, but chalo, just to clarify that सारी इंडस्ट्रीज गेट अफेक्टेड. स्ट्रक्चरल में तो फ्यू इंडस्ट्रीज गेट अफेक्टेड, राइट. तो ये हमारा एक आइडिया होता है इसके ऊपर. ओके, मूविंग ऑन. फिर उसके बाद ये आपके कुछ कॉजेज हैं. यू शुड बी एबल टू वर्क विद दिस. फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो वी टॉक अबाउट consequences of unemployment. You should be able to write unemployment के for and against argument. Now, against arguments are much more easier to do. जब आपके यहाँ consequence क्या होंगे unemployment के. इसके आप you can talk about when we talk about the consequences, you can talk about consequences to the person who is unemployed, right? Loss of income, loss of self-confidence and self-esteem, okay? Ability to afford fewer goods and services, domestic issues, divorces and all. So that can be a problem. ठीक है? A person might become de-skilled, especially if they are unemployed for a long period of time. They might start losing their edge over a certain type of work. ठीक है? So ये आपकी कुछ certain issues होती हैं. ठीक है? और ये ज्यादातर स्ट्रक्चरल और सिक्लिकल के अंदर ये इफेक्ट होगा. फ्रिक्शनल के अंदर तो आपको पता है you're continuously moving in and out of नौकरीज and things like that, so you might be able to even deal with that situation. uh, you can come up with ways. फिर उसके बाद जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है अनएम्प्लॉयमेंट की. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स सोसाइटी के अंदर जो है. मोर अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू मोर वायलेंस, मोर क्राइम, हायर डिवोर्स रेट्स, more people going on unemployment benefits, the more homelessness can also occur as a result of that. तो ओवरऑल एक इकोनॉमी की जो पोजीशन है, एक जो सोशल कल्चर की वो बातें हैं, वो गेट्स अफेक्टेड. फिर आप इकोनॉमिकली अगर बात करें तो उसके अंदर इकोनॉमिकली रिमेंबर एवरी टाइम अ पर्सन इज नॉट वर्किंग दैट आवर इज वेस्टेड एंड इट्स वेस्टेड फॉर इटर्निटी, राइट. सो इवन एवरी ईयर अगर अगर लेट सपोज कराची में एक दिन भी स्ट्राइक हो जाती है तो दैट इज लॉस ऑफ
millions of rupees because next day you cannot recover that output because next day तो आप next day की planning करते हो और next day का GDP होना चाहिए तो every strike every छुट्टी hits Pakistan economically so Pakistani government should not give so much छुट्टीज for no reason कि भाई बारिश हो गई तो छुट्टी दे दी you get economically damaged तो जब लोग अनएम्प्लॉयड होंगे एंड वर्क नहीं करेंगे so there is a big cost to the society in terms of opportunity cost that there's a loss. फिर taxation के point of view से the government loses out on the taxation that people could have worked and earned and spent and earned government. तो वहां पे भी लॉस है प्लस अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी देना पड़ रहा है so many bad effects because of that. लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के एडवांटेजेस कैसे लिखोगे कि you want to make a case कि unemployment might be good for an economy. ठीक है तो we say one of the best ones we can talk about is कि unemployment benefit देने sorry if unemployment rates are low sorry unemployment rates are high तो wages will fall down and firms will be able to get cheaper labor which will allow their cost of production to fall that can actually increase aggregate supply. अगर आप ADAS के point of view से सोचो तो overall inflation can come under control and overall economy में aggregate supply may actually increase and employment may rise in the future. So in the short run, it actually might be beneficial in for the long run advantage. I hope you understood what I meant because you have to create a way कि तुमने for argument करने की जरूरत है. एक और सोचो. I'm making this up, but it makes economic sense. पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट होती है people decide it's not worth living here they immigrate they go abroad and they work there and they send money to Pakistan and so पाकिस्तान के अंदर फॉरेन रिजर्व्स बिल्डअप होता है एंड पाकिस्तानी इकोनॉमी के अंदर बाहर से पैसे आते हैं so that sort of like seems like a positive. I know that it might not be such a overall अगर आप net effect देखें तो might not be a very good thing because of the brain drain. But I just have to make an isolation के अंदर एक advantages मुझे बताने हैं, तो I just told you two advantages. One is wages falling, benefiting the firm, increasing aggregate supply, benefiting everybody. And दूसरा, from people going abroad to look for work, earn dollars and other currencies, send that money to Pakistan. Zabardast, right? So ये दो advantages you can do that. Um, and that sort of like uh, sums up this particular chapter. But before we sum it up, we want to take a look at basically ये तो पूरे पूरे policies के questions हैं. It is too early for me to be discussing that. But छोटे मोटे we can actually discuss causes के अंदर कि frictional के मसले कैसे हल हो सकते हैं. जैसे कि सर्च अनएम्प्लॉयमेंट और कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट हैं ये आप जैसे यूनिवर्सिटीज में नहीं होते जॉब फेयर if every university starts doing job fairs and good quality job fairs where the good employers come in those kids who are just graduating उनके लिए नौकरी ढूंढना will not be such a complicated thing because they will get awareness and all. तो दैट कुड बी वन ऑफ द वेज यू कैन सॉल्व इट और इंफॉर्मेशन फेलियर जो है कि कहाँ पे कौन सी नौकरी अवेलेबल है अखबारों में देख रहे हैं लिंक्डइन पे देख रहे हैं तो there are ways through which we can create platforms and job centers where we can reduce this problem. Seasonal का हल तो सेम है certain seasons cannot be pushed to 24 12 months जैसे एग्रीकल्चर में है जैसे इट माइट बी टूरिज्म रिलेटेड तो आप क्या कर सकते हैं आप अपने वर्कर्स को दो किस्म के कामों के अंदर ट्रेनिंग दे सकते हैं तो ऑन सीजन दिल गो फॉर द मोर लुक्रेटिव वन एंड ऑफ सीजन जो है दे कैन गो फॉर अदर नौकरी थ्रू ट्रेनिंग ऑब्वियसली दैट दे विल बी एबल टू डू स्टफ. स्ट्रक्चरल के अंदर जो है रीजनल पॉलिसीज हो सकती हैं जिसमें गवर्नमेंट माइट ट्राई टू प्रोटेक्ट देम
टेक्नोलॉजिकल के अंदर तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट हैज टू ट्रेन पीपल, re-educate them. They have to have those vocational centers and all जिसके हेल्प कर सकते हैं. इंटरनेशनल के अंदर तो यही हो सकता है कि या तो आप लोगों को रीट्रेन करके दूसरी स्ट्रक्चर्स या इंडस्ट्रीज में मूव करें, या फिर आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करें, टैरिफ्स वगैरह लगा के, प्रोटेक्शनिज्म लगा के, एंड यू कैन प्रोटेक्ट योर ओन डोमेस्टिक फर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ दैट. तो ये भी हो सकता है. सिक्लिकल के अंदर तो हमारे पास जब एडी गिर रहा है एंड इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम, तो सिंपल है, एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करें एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करें. जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो ज्यादातर आते हैं कि किस तरह से फिस्कल, मॉनेटरी, supply side protectionist policies, how they might affect the structural unemployment, and can they solve the cyclical unemployment का problem and all. तो वो उस तरह से इसके ऊपर questions आ चुके हैं. um, so you might want to take a look at one of those essays. I can show you, let me show you a couple of essays इसके अंदर जो आ चुके हैं. एक जो हमारे वेरिएंट में आया था, लेट मी शो यू दैट. हमारे वेरिएंट में आया था, नवंबर 24 के अंदर आया है. So let's start with that because it deals with both the things that I'm talking about right now. So let me open that. Okay. It's in November. Yeah. So right over here, this was one of the questions I was talking about. Explain two methods of measuring unemployment and consider the extent of the possible difficulties in obtaining an accurate measurement of employment. What difficulties we might face, when we are measuring. ठीक है. तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या था? फर्स्ट, वी रिमेंबर 3 marks knowledge and understanding, then 3 marks for the analysis where you will discuss the difficulties, and then 2 marks for the evaluation. तो 2 methods जब उन्होंने बोल दिया है, तो क्लेमेंट काउंट मेंशन करने का 1 mark और लेबर फोर्स सर्वे मेंशन करने का, इनफैक्ट दोनों को मेंशन करने का 1 mark है. करेक्ट टर्म्स. फिर सो लेट्स से क्लेमेंट काउंट आपने मेंशन कर दिया और आपने मेंशन कर दिया लेबर फोर्स सर्वे, यू गेट 1 mark. फिर आपने क्लेमेंट काउंट को एक्सप्लेन किया कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं, 1 mark. फिर लेबर फोर्स को आपने एक्सप्लेन किया, व्हाट इट मींस, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, 1 mark. ठीक है. फिर जब आप डिफिकल्टीज की बात करते हैं, ओके, व्हाट आर द डिफिकल्टीज व्हेन यू आर मेंशनिंग द क्लेमेंट काउंट, तो उसके अंदर आपने कहा भाई लोग इलीगली क्लेम कर सकते हैं, या you could say that people voluntarily can, it's possible that they might not, because of the status or the ego, they might not be, claiming unemployment benefits. So that means your data is off, right? Because it's about the accurate measure of employment. So your data is off as a result of that. फिर लेबर फोर्स सर्वे के अंदर भाई ये सर्वे है, सैम्पलिंग एरर्स हैं, लोग अपना डेटा सही से नहीं दे रहे हैं, सर्वे सही से कंडक्ट नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से यू कांट ऑब्टेन द राइट डेटा. बिकॉज रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट वेदर राइट डेटा आपको मिल रहा है कि नहीं, और उसकी एक्यूरेसी कितनी है, कितनी नहीं है. ठीक है. सो
फ्रॉम द मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू मैंने तुम्हें बता दिया, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में आपको किस तरह से मार्क्स मिल रहे हैं। इसकी डेफिनेशन आई रिमेम्बर, जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स या पीपल आर क्लेमिंग बेनिफिट्स, ऐसा कोई भी टर्म मुझे नजर आया मैंने मार्क दे दिया। इसके अंदर सर्वे एंड आइडेंटिफाइंग पीपल, किसको नौकरी है किसके पास नौकरी नहीं है, तो आई गिव अ मार्क फॉर दैट क्लियरली, यू नो, टर्म्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड। फिर उसके बाद डिफिकल्टीज के अंदर, दोनों के अंदर क्या मसला है, क्लेमेंट काउंट के अंदर people might be looking for work, but they're not part of the discussion making. Claimant count figures may omit people actively looking for jobs and may include people who are in reality not looking for a job. तो ये बेसिकली क्या कह रहे हैं डिफिकल्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, दैट एक्यूरेसी का प्रॉब्लम क्या है क्लेमेंट काउंट के अंदर, विच इज कि क्लेमेंट काउंट के अंदर एक बंदा नौकरी ढूंढ रहा है लेकिन वो क्लेम नहीं कर रहा, दैट इंडिविजुअल इज मिसिंग इन द डेटा। ठीक है, एक बंदा है जो रॉन्गफुली नौकरी कैश पे कर रहा है, गवर्नमेंट के डेटा में नहीं है, और वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ले रहा है, वो रॉन्गफुली आ गया, ओवरस्टेट हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। लेबर फोर्स के अंदर सैम्पलिंग एरर्स, नॉट गेटिंग द राइट डेटा, एक्यूरेसी इज क्वेश्चनेबल। एज लॉन्ग एज यू गिव मी बोथ, दोनों का एक एक दे दो, ठीक है, आई कैन गिव यू फुल मार्क्स, लेकिन दोनों का लिखना जरूरी है। इट सेज नोट maximum of 2 marks if the difficulties of only one method of measure has been analyzed। मतलब आपने मुझे 2 पॉइंट्स दे दिए लेकिन एक का ही दिया है। फिर इवेल्युएशन के अंदर यू बेसिकली मेकिंग अ कंपैरिजन, यू नो, the extent of the possible difficulties in obtaining an accurate measure of unemployment, the extent of getting the difficulties। इसके अंदर आई हैव टू मेक अ केस कि कौन सा में ज्यादा डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ेंगी एज कंपेयर टू विच वन आई वांट। तो इसमें थोड़ा सा आई फील दैट एडवांटेजेस कम इनटू प्ले अ लिटिल आल्सो, कि claimant count is much more quicker and easy to calculate. So if you have unemployment benefits, it can be a much more faster way of you can collect। लेकिन what about countries जिसके अंदर unemployment benefits होते ही नहीं है, तो फिर then this पूरा method becomes redundant, right? And the governments can manipulate the data। लेकिन लेबर फोर्स के अंदर तो गवर्नमेंट के पास कंट्रोल ही नहीं है, एंड गवर्नमेंट हैज स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज बेस्ड ऑन which they are doing the collection and coming up with the number। So, because of that due diligence, because of that different criterias, labor force survey, with all its difficulties, is still a better measure comparatively and has lesser difficulties compared to the claimant count. So, somewhere along this line, you can make a sort of like a discussion for this particular question. ठीक, तो that is what was required। The key part was accurately measure करने में क्या challenges आ रहे हैं, और वो basically difficulties के साथ deal कर रहे हैं। We saw a lot of kids wrote the advantages and the disadvantages, and it sort of worked in their favor because वो disadvantages के अंदर एक repetition में वो बात हो रही थी। Because I remember giving marks for even though यहाँ देखो कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा that people might be doing like false claim कर सकते हैं, uh, या लोग हो सकता है बड़े डिस्टेंस एरियाज में रह रहे हों, तो जिसकी वजह से जो है लोग आके जॉब सेंटर्स के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्लेम ना कर पा रहे हों बिकॉज ऑफ द स्टेटस एंड द ईगोस। These are all difficulties of claimant count because of the inaccessibilities and all of that, right? Any question on this?